Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of economics, business, and the stock markets. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की तमाम खबरें लेकर के आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, गुड इवनिंग, थैंक यू। और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की हम हेडलाइंस के साथ में। रंगाभाष्यम जी। Thank you, Nikhil. The top stories. Key domestic indices log losses. Sensex closes below 61,200 points, while Nifty settles near 18,000 level. The rupee appreciates 5 paise to close at 81 rupees and 83 paise against the US dollar. And Brent crude trades at $78.97 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 61,200 अंक से नीचे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,000 अंक के स्तर के आसपास बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत और $1.81 का, और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत करीब $78.97 प्रति बैरल के आसपास। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। तो घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख देखने को मिला। शीर्ष 30 कंपनियों वाले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 61,200 अंक से नीचे रहकर बंद हुआ, जबकि 50 शीर्ष कंपनियों वाले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,000 अंक के स्तर के आसपास पहुंचा। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच दोनों प्रमुख सूचकांकों में आज सुस्ती देखी गई। सेंसेक्स 161 अंक यानी कि 0.26% की गिरावट के साथ 61,193 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 58 अंक टूटकर यानी 0.32% लुढ़ककर 18,090 के स्तर पर पहुंच गया। बीएससी के विस्तृत बाजार में मिड कैप इंडेक्स आज 0.35% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की तेजी दर्ज हुई। Well, as Nikhil just mentioned, key domestic indices logged losses today. Index of top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, Sensex, closed below 61,200 points, while Nifty, which is the index of top 50 companies at the National Stock Exchange, settled above 18,000 level. Both stocks fell amid mixed global cues. The Sensex declined 161 points or 0.26% to close at 61,193. The Nifty at the National Stock Exchange also fell 58 points or 0.32% to close at 18,090. In the broader markets at the BSE, the mid-cap index rose 0.35%, while the small-cap index added marginally by 0.2%. In the Sensex pack, shares of 12 firms rose while 18 fell. Hindustan Unilever was the top gainer as it surged 1.4%, followed by Asian Paints, which climbed 1%. Tata Motors rose 0.8% and Ultratech Cement appreciated 0.7%. On the other hand, Bharti Airtel plunged 1.5% and Tech Mahindra slumped 1.45%. Axis Bank and Tata Consultancy Services both fell around 1.2% each. In sectoral indices at the BSE, 7 sectors were positive while 13 fell. FMCG sector gained 0.7% and services sector surged by 0.6%. On the other hand, telecommunication sector declined 1.3%, tech sector slipped 1%, information and technology plunged 0.85%, while oil and gas sector was down by 0.8%. The overall market breadth was positive as shares of 2,179 companies advanced, while those of 1,314 companies declined. A total of 136 shares, however, remained unchanged. Avinash, to talk about today's stock market action, both the indices have gone down marginally.
But otherwise, would you say that the positive sentiment and undercurrent is still intact? Yeah, I think, see, basically the undercurrent is intact, but it will depend on what is the kind of Fed commentary which comes tonight. Because, the markets in US were rattled yesterday because some more banks came under selling pressure. And the broad consensus is that Fed may raise interest rates by about 25 basis points. But how dovish or hawkish the governor's commentary is going to be very important, because on ground inflation levels have not come down. Headwinds still continue to exist. And I think in case there is some hawkish commentary from the Mr. Powell, then that could definitely have an impact on the market sentiment once the Fed meeting is complete. So I think markets are clearly waiting for this event to get over. But in India, domestic markets, the corporate performances of most of the companies has been on expected lines, very few negative surprises. And I think FIs have been pumping in money quite regularly. That's a good point. In fact, in today's session also, about 1,200 or 1,300 crores of inflows have come in the cash market segment, which is a very interesting and a very positive development. So I think as long as FI liquidity comes in, I think the markets domestically are well positioned. Today was a profit booking day, and I think markets will now wait for the Fed commentary to come out post the Fed meeting. Yeah. And Avinash, we are talking about the market action today. On a day when the Sensex and, Nifty fell, the mid-cap and small-cap surprisingly moved up. So would you say that the broader market is still intact and there is, upward movement, and whatever happened at the Sensex or Nifty level was kind of a shallow action? No, actually, my sense is the small cap and the mid cap has been, going up largely because some of the companies have been reporting very strong numbers, and I think these companies had been beaten down very badly. So I think there is some, catch up in terms of valuations. Some, value buying has also been coming in from large as well as HNI investors. So you're right that, the broader market may not, reflect the entire buying sentiment, but especially the mid caps and the smaller companies, I believe, are well positioned, provided, the investor does his homework well, gets into companies where the business model is good. And this, I think, scenario is going to continue at least in the coming few quarters, because markets are likely to, look at value. If the value is good, earnings growth is strong, then I think these companies should do better. अविनाश, आज की अगर हम बात करें तो हमने देखा शेयर बाजार में लगातार 8 सत्रों की तेजी के बाद आज बाजार टूटा, या हम ये कह सकते हैं कि आसान शब्दों में 8 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया है। बहुत सारे कारण इसके पीछे माने जा रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत हुई वो भी आज गिरावट के साथ हुई थी। हालांकि पिछले हमने कई बार में ये देखा है कि गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन बंद जब हुआ सेंसेक्स या निफ्टी तो एक पॉजिटिव नोट पर जाकर बंद हुआ, लेकिन आज वो गिरावट के साथ ही खुला और गिरावट पे ही बंद हुआ। नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि बाजार में 8 दिन की जो तेजी आई है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर था वो बेसिकली एफआईएस के इन्फ्लोज थे। हमने देखा कि एफआईएस के इन्फ्लोज रेगुलरली पिछले 8-10 दिनों से बहुत पॉजिटिव थे। इंडियन मार्केट्स में पैसा वो डाल रहे थे जी। और दूसरी बात क्या है कि आज बाजार में थोड़ा सा एक बिकवाली का मोड इसलिए आया क्योंकि 3 मई को जो फेड की मीटिंग का रिजल्ट आएगा वो रात को जो हमको पता चलेगा वो काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट जो पोवेल साहब ने बोले थे कि 25 बेसिस पॉइंट हाइक करने के बाद वापस कोई इंक्रीज नहीं आएगी, तो यही कमेंट्री अगर आगे सुनने को आज मिलती है तो मार्केट में डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा, आपको अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बट ये मेरे ख्याल से कमेंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो शायद कल के सुबह में हमको देखने को मिलेगा। बट फिलहाल आज मार्केट थोड़ा सा अनसर्टन था क्योंकि कल रात को यूएस में बैंकों में बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई, डाउ भी 200-300 पॉइंट गिरा था, तो उसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट में भुगतना पड़ा। अभी आपने अमेरिकी बैंकिंग क्राइसिस का थोड़ा सा जिक्र किया था। मैं अगर खबरों की बात हम माने तो एक और बड़े बैंक के डूबने की लगातार खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं अब बहुत ही नीचे जाती जा रही है। लगातार इसे रोकने का कोई उपाय भी शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी खबरों का कयास है, तो भारतीय बाजार पर इसका असर आप देखते हैं क्या? देखिए, इंडियन बैंक्स को और यूएस बैंक्स को डायरेक्ट कंपेयर करना शायद ठीक बात नहीं रहेगी जी। हालांकि देखिए, इंटरेस्ट रेट्स जो यूएस में बढ़ेंगे इसका असर डेफिनेटली हमारे आरबीआई की पॉलिसी में आएगा।
बट बैंकों की फाइनेंशियल पोजीशन कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी. इनफैक्ट आज जो रिपोर्ट आया था कि गो फर्स्ट एयरलाइन बैंकरप्ट हो चुका है, वहां पे 3 बैंकों में थोड़ी सी होती है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल इंडिया है, जहां पे इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है. बट अदरवाइज सारे बैंकों ने अपनी लीगेसी जो बैड एसेट्स है वो प्रोवाइड कर चुके हैं. और ये नॉट ओनली सरकारी बैंक्स में हुआ है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी हुआ है. तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट कोरिलेशन तो हम नहीं देख सकते, बट हाँ, अगर ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज गो फर्स्ट का जैसा 2-3 और इवेंट्स इंडियन मार्केट में होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी. बट अदरवाइज बैंकिंग इज वेरी वेल पोजिशन. Yeah, and Avinash, you're talking about the Federal Reserve and the street expectation that probably there would be a hike of 25 basis points. But what would you see? What would you say? Means actually, could they do a RBI? Means give a surprise by keeping status quo and not increasing the rate at all, like RBI did recently. No, I think, see, basically, all that depends on the, inflation growth trajectory. Inflation, even as of now in the US, has not come down to the comfort of the, Fed. So my sense is that, after this 25 basis point hike, which the market has more or less, discounted, what is important is going forward, how does the Fed look at, the interest rate scenario? What is the expectation of the economic growth? So I think that is something which is more important. So I think a pause will be difficult because even last time, people were having expectations that there would be no rate hike. But yeah. So I think going forward, how many more rate hikes would come in is something which the markets would like to know. If there are no rate hikes, that would be definitely be good news for the market. Yeah, and Avinash, this aggressive rate hike regime by the Federal Reserve was by some analysts and interpreters, it has been observed that probably that was a reason for some of the banks to go bust. This aggressive rate hike regime. So, don't you think the Federal Reserve would kind of sit up and take notice of that aspect as well in order to, safeguard the others which are on the verge of a collapse? Yeah, I think you're absolutely right. See, what has happened is successive Fed rate hikes have actually increased the bond yields. And that has resulted in a very large M2M bond losses for most of the banks who are carrying the bonds on their balance sheet. Now, to help these banks, what the Fed did earlier was that they have already announced a 300 billion fund where, banks can go to the Fed and liquidate the bonds rather than going in the market and selling them at loss. So I think some amount of action has been taken out by the Fed. But, naturally, you won't be able to, you won't be able to, save all the banks in this system. So I think the Fed is obviously looking at the fact that after the next, say, 6 to 8 months, if inflation cools off, then automatically interest rate hikes are ruled out, and that would obviously help these banks, naturally. So it's a wait and watch game. Yeah. Avinash, let's also talk about the aviation sector. You made a mention of, Go First, going bust and bankrupt. Do you think, there's going to be some kind of consolidation in the aviation market in the country, and all the more because now, Air India has been taken over by the Tatas, and there seems to be consolidation in the group among, Air Asia, Vistara and Air India, and on the other hand, you have other airlines like Indigo and all. Do you think, the Indian market has now matured for an oligopolistic kind of a market between competitors? Yeah, definitely. See, because globally also, aviation market has consolidated. And even in India, after, Kingfisher, after Jet, and now Go First, I think you're going to see a lot of consolidation happening in the Indian market. I think players like Indigo will benefit more because they already control a 50% market share. Yeah. Tata's having taken over Air India also would obviously benefit because, the choices with customers would be limited. And recently I was reading that, about a couple of days back, that the air traffic has reached record levels, post-COVID. Post-pandemic, yeah. So definitely a positive for the existing players. अविनाश, अभी आप एविएशन का जिक्र कर रहे थे, रंगा आपने भी जिक्र किया. मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आई, आजकल इसके खूब चर्चे हो रहे हैं और तमाम जो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खासतौर पे आईटी सेक्टर की, वो एआई की फील्ड में लगातार आगे बढ़ रही हैं. एक निवेशक की दृष्टि से अविनाश, अगर हम देखें तो इसका फ्यूचर आपको किस तरह का लग रहा है? क्या निवेशकों को इस फील्ड में और आगे बढ़ना चाहिए या फिर अभी होल्ड करना चाहिए? नहीं, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का यूज तो अभी काफी बड़ी मात्रा में आईटी कंपनीज में हो रहा है.
और यहाँ पे जो कस्टमर्स भी है, स्पेशली जो फिनटेक कंपनियां जी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का काफी यूज करते हैं. बट ये कहना कि सिर्फ प्योरली यही कंपनीज में ग्रोथ आएगा, कहना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि आईटी कंपनीज में देखिए बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ से भी ग्रोथ आएगा. अभी कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन सेक्टर्स को यूज होता है वो आगे देखना पड़ेगा. बट डेफिनेटली अगले 2-3 साल में हमको लग रहा है कि अच्छे खासे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आईटी कंपनीज को इस सेक्टर से मिलेगा. अविनाश, आप रिटेल सेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? आजकल रिटेल सेक्टर को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार नई कंपनियां मार्केट में हमें देखने को मिल रही, आईपीओस भी कई सारे लॉन्च होने वाले हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तो निवेशकों के लिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं इनसे? ये देखिए, मुझे लग रहा है कि रिटेल का मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है, और जैसे अभी हमने डीमार्ट के नंबर्स देखे थे, जी नंबर्स देखे थे, तो इंडिया में रिटेल का मार्केट शेयर अभी भी काफी छोटा है, और मुझे लग रहा है कि अगले 4-5 सालों के लिए ग्रोथ मोमेंटम बहुत बढ़िया रहेगा. अभी पोस्ट कोविड नॉर्मलिटी अभी जगह पे आई है जी. यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो पॉपुलेशन है हमारा 140-42 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, उसके कंपैरिजन में हमारे पास बहुत छोटे रिटेल प्लेयर्स है. अगर हम यूके जाए या या यूएस में जाए, वॉलमार्ट या टेस्को जैसे जो बड़े खिलाड़ी हैं, इनके काफी बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं. तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल अगले 3-4 सालों के लिए बहुत भी बढ़िया है टू कवर द मार्केट इन इंडिया. Yeah, Avinash, earlier we were talking about the aviation sector. Aviation sector, is actually notorious for operating on, wafer thin margins. And we all do acknowledge that, almost 50% of their operating costs is attributed to ATF, the aviation turbine fuel. Of late, we had seen there is some stability in crude oil prices, having a cascading effect on ATF prices as well. So that in a sense is a kind of solace for the entire sector, isn't it? No, actually, between you and me, see, aviation sector has traditionally been not a very profitable sector, because 60% of the cost is the fuel cost. Then again, employee cost is very large. So their fixed costs are extremely high. And fortunately, for the last 3 to 4 months, crude prices have settled down. In fact, now crude prices are around $70 a barrel, which is good news for aviation companies, because these airline companies have to operate whether their their plant load, their aircraft load factor is 50% or 60%. So it's a very high fixed cost intensive business. So I think it's only a matter of time where only 3-4 players remain in the industry, and thereby there will be some consolidation, and obviously there will be some pricing power which these companies will be able to get, which as of now it doesn't appear to be coming that soon. Yeah, Avinash, let's move on and also do a kind of a quick roundup of the entire economy and the macroeconomic fundamentals of our country at this juncture. From the stock market's perspective, the big triggers like, budget announcements or the numbers, the Q4 numbers, and also the numbers for the entire financial year 22-23 have come out. So moving ahead, apart from the estimation of the monsoon, what other factors could be big triggers for the stock market? I think now the earnings season is going on. I think till the time the earnings season goes, the most important thing will be data points which are shared by the companies post the numbers, especially the commentary from the top management. After that, as you rightly said, the monsoon factor is very important. In fact, if the El Nino factor does not work out and we have a normal monsoon, then I think the market should give it clearly a big thumbs up. And most importantly, what is the scenario on the US Fed? Because typically market will be looking at the fact that if there is a pause in interest rates from the US, that will signal a kind of a rate pause even in the Indian markets. So I think, the monsoon and the Fed policy, these are two immediate triggers. And after that, obviously, what, headwinds are there in US and, Europe, because both these economies are facing severe kind of underperformance, some sort of recession. So what kind of tailwinds are going to come in from there? So domestic markets will definitely continue to do well. The export market companies are definitely going to find at least another couple of quarters a little challenging. So I think it's going to be at least some challenge, at least for the next 1 or 2 months. Hopefully, if the Fed does not raise rates and we have a good monsoon, then the markets could continue its upward journey.
अविनाश, बहुत सारी बातें क्लियर हो गई, लोगों को बहुत कुछ समझ में भी आया है। मेरा थोड़ा सा सवाल इससे हट करके ही है, हम बहुत सारे सेक्टर्स पर जा रहे हैं, लेकिन अभी अगर मार्केट पर हम वॉच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगातार एफएमसीजी और पीएसयू बैंकिंग और मेटल सेक्टर लोगों को बार बार अट्रैक्ट करता रहा है और करता रहा है और कर भी रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो मेटल सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या ये उचित समय है मेटल सेक्टर में जाने का, खासतौर पर शेयर मार्केट के जरिए? देखिए, मेटल सेक्टर में हमको लग रहा है कि कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा। टाटा स्टील के नंबर आ गए, नंबर तो काफी अच्छे थे, लेकिन यूरोप के नंबर्स अभी भी थोड़े कमजोर आए हैं। और दूसरी बात, जब तक चाइना मेटल मार्केट में कोई बड़ी मात्रा में उतरता नहीं है, ग्लोबली मेटल प्राइसेस इतने जल्दी चढ़ेंगे नहीं। जो डोमेस्टिक मेटल कंपनीज है वो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंड इंडिया में हो रहा है उससे उनका फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको खरीदना ही है तो आपको साल 1.5 साल का नजरिया लेके आप थोड़ा निवेश कर सकते हैं, जैसे कि टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, वेदांत। बट ये सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होगी, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी आउट परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख देखने को मिला। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों से संबंधित फैसले को देखते हुए वॉल स्ट्रीट में नुकसान दर्ज हुआ। यही कारण था कि एशियाई बाजारों में आज नरमी आई। हांगकांग का हैंग सेंग 1.2% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 1% सुस्ती के साथ बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स 0.6% नुकसान में रहा। जापान का निक्केई सूचकांक संविधान स्मृति दिवस और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक श्रम दिवस समारोह के चलते बंद रहे। दिन भर के कारोबार में आज यूरोपीय शेयर बाजारों में सकारात्मक माहौल देखा गया। जर्मनी का डेक्स 0.8% ऊपर आ गया और फ्रांस का कैक 0.65% चढ़कर कारोबार कर रहा था। वहीं लंदन का FTSE 100 0.25% लाभ में रहा। अविनाश जी, एशियाई बाजारों और यूरोपीय शेयर बाजारों पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, यूएस और एशिया और यूरोप के बाजार में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इवेंट रहेगा वो ऑब्वियसली रेट हाइक्स का ट्रेंड कैसे चलेगा। सबसे बड़ी बात, यूरोप में अगर कोई बैंक क्राइसिस नहीं होती, होपफुली अगर दो थिंग्स गेट नॉर्मल, तो फिर वहां से डेफिनेटली एक रिकवरी आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे काफी पिटाई स्टॉक्स की हो चुकी है जी। मुझे लग रहा है कि एशिया मार्केट्स विल फॉलो व्हाट हैपेंस इन यूएस एंड यूरोप। तो मेरे ख्याल से यूएस के जो डेटा पॉइंट्स आएंगे इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, ये सारे नंबर्स आने वाले महीने 2 महीने में बहुत इंपॉर्टेंट रहने चाहिए। Well, let's go across to the American markets. Major US stock indices fell more than 1% each yesterday as regional bank shares stumbled on renewed fears over the financial system and as investors tried to gauge how much longer the Federal Reserve may need to hike the interest rates. The S&P 500 fell 1.2%, while the Nasdaq Composite Index and the Dow Jones Industrial Average both plunged 1.1% each. Avinash, to talk about the US market, as we all discussed, the Federal Reserve's meeting and the decision would be a big trigger. But don't you think another apprehension is equally important of whether these banks which are going bust, whether it is a kind of a series and a contagion could follow? See, I think you're right in saying that, but as of now, the US has given some short-term solution to the problem, although it is not a long-term problem. My sense is that, the long-term solution will come only when inflation levels come down in the US and the bond yields start coming down. And for that, you'll have to wait for the next 6 to 12 months. I think my sense is that over the next 3 to 4 months, if inflation, peaks out, that will be a big kind of a positive surprise, and that would actually save the banks, because bond yields going down will help them to reduce their losses on their bond portfolios, which are, pretty large. So as of now, it's a short-term solution, but a long-term solution, unless it doesn't come, I think these kind of problems will continue over the next 6 to 12 months for banks in the US. Yeah. As far as the US entire stock market is concerned, they have also been bogged down by inflation fears, as in India we have been trying to contain the issue of inflation in the last 1.5 years. Don't you think inflation again for the US economy is also equally important? They need to tackle it big time. No, definitely. See, that is why I was mentioning that inflation on ground has still not come down. Markets have rallied, of course, based on the fact that there are expectations that the Fed will now go in for a pause. But Fed will also have a very big challenge to, go for a pause unless and until inflation does not come down.
See, Mr. Powell had already said that he is not going to sit idle or remain inactive against the rising inflation. So if inflation really peaks out, then I think the market should definitely get a sigh of relief. But as of now, at least for the next 2 to 3 months, it doesn't appear that inflation is going to go away down in a significant manner. और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत होकर 81.83 पर बंद हुआ। वहीं दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में आज 0.35% नीचे आकर 101.60 पर कारोबार कर रहा था। And very briefly about the forex scenario as well, Avinash. We have seen the rupee dollar equation, hovering around that, 82 rupees to a dollar mark. Don't you think that's heartening for the Indian economy? Although, we call it a double-edged sword for foreign trade. Exports and imports both are impacted. But somewhere, in the last, almost 1.5, 2 years, it has hovered around that region of 82 rupees. No, I think my sense is the dollar will not, be very volatile, at least in the near term, till inflation does not come down. And as long as the dollar index remains at these odd levels, our sense is that, the dollar will consolidate for some time. Maybe around June or July, we could possibly see, the rupee hardening. As of now, we don't see any chances of the rupee hardening significantly. And to that extent, I think, we don't think, importers will have a problem. At the same time, exporters also will be, positioned on a neutral level. So I think nothing to worry on the currency side. As I believe that, only around June, July, we could see some sort of volatility in the, dollar rupee kind of parity. Right. Let's go across to the energy sector. Oil prices extended losses today after plunging 5% in the previous session, as investors fretted about the health of the US economy ahead of an expected Fed Reserve's interest rate hike later in the day. In intraday trade, Brent crude was trading at $78.97 per barrel, while WTI crude price was at $75.29 per barrel. Very briefly, Avinash, the impact of Russia-Ukraine conflict on oil prices seems to be kind of, more or less over. Yeah, it seems to be over because, despite recent developments by OPEC, that cutting down oil production, it is still quite surprising to know that, oil prices have continued to remain weak. So this is definitely a good sign for, countries like India, which are net importers. Although, India has been importing a large part of the crude requirements from Russia and getting the price advantage. So my sense is that, Russia-Ukraine issue has more or less been discounted by the oil markets. Now going forward, it all depends on the economic development. If the economies of US, Europe, obviously China, if they grow significantly, then oil demand will definitely increase. This shows that, world is still a little worried about the economic growth of these countries. And that is why oil consumption has fallen back and we are seeing a cutback in prices. जी, और अब गोल्ड पर नजर डालते हैं तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार वाला सोना 116 रुपए की बढ़त के साथ 60,745 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दूसरी ओर मई अनुबंध वाली चांदी 176 रुपए ऊपर आकर 75,220 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। और न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $2,023.40 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी गिरावट के साथ $25.55 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। अविनाश जी, गोल्ड पर बहुत ही छोटा सा कमेंट आपका। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए इस भाव से गोल्ड में कोई बड़ी तेजी या कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी काफी सिग्निफिकेंटली गोल्ड का भाव चढ़ा है, करीबन 60,000 या 60,000 रुपए के ऊपर है जी। अभी मुझे लग रहा है कि जब तक मेरे ख्याल से करेंसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता तब गोल्ड में कोई बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड नहीं आएगा। तो गोल्ड के लिए मेरे ख्याल से न्यूट्रली स्टैंड रहेगा, इसमें कोई बड़ा लॉन्ग या शॉर्ट कॉल लेना ठीक नहीं रहना। जी जी, अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने और हमसे चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। And before we close, a quick look at the top stories. Key domestic indices log losses. Sensex closes below 61,200 points. Nifty settles near 18,000 level. Rupee appreciates 5 paise to close at 81 rupees and 83 paise against the US dollar. And Brent crude trades at $78.97 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Namaskar. Market Mantra.